Hello everyone, welcome to HW News. Today we are going to talk about how a coronavirus review meeting turned into a political slugfest of political parties. But before that, if you're watching this video on YouTube, then please make sure you subscribe to our channel, you like this video and you comment below it. And if you're watching this video on Facebook, then please make sure you like our page and share this video to as many people as possible. Let's begin with today's video. Amid the coronavirus crisis in the country, which is spiraling out of control, Prime Minister Narendra Modi today held a marathon meeting session. The meetings to review the COVID-19 situation came after Prime Minister Modi on Thursday announced that he will be cancelling all his physical rallies to West Bengal, where two phases of polling are still remaining. First, at 9 a.m., he conducted an internal meeting. It is yet not known who all were part of the internal meeting. Thereafter, at 10 a.m., he conducted a meeting with chief ministers of the states which were hit the most by the coronavirus pandemic. However, what was supposed to be a serious discussion, a problem-solving avenue, and collaborative cooperation between the states and the centre soon turned into a political mudslinging. It became a political ring for the centre versus Delhi government. So what exactly happened today? It all started with Delhi Chief Minister live telecasting the meeting with Prime Minister Narendra Modi. While the discussion was going on between the central government, that is Prime Minister Modi, and several chief ministers of different states, Arvind Kejriwal started describing the ordeals of the states to PM Modi. Kejriwal, who looked anguished, said that a big tragedy may happen in Delhi due to oxygen shortage in hospitals. He also said that the centre should take over all oxygen plants through the army. CM Kejriwal appealed to Prime Minister Modi to take strict action to contain the situation due to the second wave of COVID-19 pandemic, else there will be a big tragedy. He also requested PM Modi to direct all the chief ministers of all states to ensure smooth movement of oxygen tankers coming to the national capital. Drawing the attention to shortage of oxygen in Delhi, he asked, "There is a huge shortage of oxygen in Delhi. Will people of Delhi not get oxygen if there is no oxygen producing plant here?" He also said that the oxygen supply scheduled to come to Delhi from Odisha and West Bengal should either be airlifted or brought through the Oxygen Express started by the centre. When he lauded the idea of Oxygen Express started by the centre, Prime Minister Modi intervened and said that it was not an idea but actually the implementation has already started. In a prompt response, Kejriwal said that even though it has started for other states, Delhi is yet to receive oxygen through the initiative. Now, Kejriwal further spoke about ramping up vaccination as well. Now, before moving further, let us quickly hear a couple of things that Kejriwal said during this meeting. शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने और पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज तक हमें हर कदम पे साथ दिया है और आपकी तरफ से जो जो निर्देश आए उन निर्देशों का भी हमने बहुत कड़ाई से पालन किया। आपका हमेशा सहयोग मिला। दूसरा सर, इस वक्त दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा है जिसमें आपकी मदद चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। लेकिन सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस बढ़े हुए ऑक्सीजन के कोटे को दिल्ली तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। एक एस्टीमेट के हिसाब से दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आपने हमारा कोटा 480 टन कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पिछले 24 घंटों में इस बढ़ाए हुए 480 टन में से भी केवल 350 टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंच पाई है। प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है, मेरे फ़ोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। हमने मदद के लिए केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों को फ़ोन किए। शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर, लेकिन अब वो भी बेचारे थक गए हैं। सर, देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी?
जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं? ऐसे में हम क्या करें? सर, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आपने ये मीटिंग बुलाई है, बहुत सही समय पे ये मीटिंग बुलाई है। पर सर, मैं आज ये जानना चाहता हूं कि अगर आज या कल या किसी भी टाइम हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए, तो मैं फ़ोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूं? सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन का ट्रक रोक ले, तो मैं फ़ोन उठा के किससे बात करूं? हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं सर। हम अपने लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। हमें लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि एक एक जिंदगी हमारे सबके लिए कीमती है। हम आपसे फिर से दिल्ली के लोगों की तरफ से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि सर, तुरंत कोई कठोर और सार्थक कदम नहीं उठाया गया तो शायद दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं सर। Now you would say, what is wrong with the address? Well, nothing is wrong with Kejriwal's appeal to Prime Minister Modi. However, to the surprise of PM Modi, the interaction between Delhi Chief Minister and PM Modi was televised live from Arvind Kejriwal's office. The interaction between the two was flashed on all leading TV channel screens for a brief period before it was cut off. Now, when Prime Minister Modi came to know about this, he was visibly upset with this. Infuriated, he gave a stern message to Delhi Chief Minister. PM Modi said, "What is happening? This is strictly against our tradition, our protocol, that some Chief Minister is showing a live telecast of an in-house meeting. This is not appropriate and we should always maintain a restraint." Now, this is what he chided the Delhi Chief Minister, who then apologized. Kejriwal then replied that he will be careful in the future. Now let us exactly see how the moment unfolded on live television. मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। Well, soon after the incident caught internet's attention, the centre, unhappy with Kejriwal's actions, said that it was done for publicity. Government sources said that interaction was not meant to be televised and accused Kejriwal of descending to a new low by doing so. For the first time, private conversation of Prime Minister's meeting with Chief Ministers is being televised. His entire speech was not meant for any solution, but for playing politics and evading responsibility. This is what the sources said. The central government later accused him of using the platform to play politics and spread lies. Top sources also said that Kejriwal raised the point of airlifting oxygen but did not know it is already being done by the centre. The centre, they also said, had done more to provide beds and oxygen than the Delhi government. Soon after the Chief Minister's office issued a clarification, Kejriwal's office said that the Chief Minister's address was shared live because there was never any instruction, written or verbal, from the central government that the said interaction could not be shared live. There have been multiple occasions of similar interactions where matters of public importance which had no confidential information were shared live. However, if any inconvenience was caused, we highly regret that. This is what the response was from Kejriwal's office. However, many on Twitter also pointed out that PM Modi himself in the past has shared his address to the chief ministers for live broadcast. And here is one of them. 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर जी की जन्म जयंती है।
क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें, जीरो वेस्टेज तय करें हम कि इन 4 दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज होगा। वो भी हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ये हम लोग करें। और इसके लिए अब हमें यदि वैक्सीनेशन केंद्रों की संख्या बढ़ानी है तो उसको भी बढ़ाएं। पहले एक बार देखें कि हम 11 से 14 अप्रैल किस प्रकार से चीजों को मोबिलाइज कर सकते हैं। एक अचीवमेंट का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वातावरण बदलने में बहुत काम आएगा। और मैं भारत सरकार को भी मैंने कहा हुआ है कि जितनी मात्रा में हम वैक्सीनेशन पहुंचा सकते हैं पहुंचाने का प्रयास करें। Meanwhile, Delhi's nightmare continues. The national capital is facing acute shortage of medical oxygen supply. On Friday morning, 25 critical patients at Sir Gangaram Hospital died after the facility ran out of oxygen. Hospitals have also started turning away patients, citing a lack of oxygen to help them. Amid the deadly situation facing the national capital, a politics over live telecast is the last thing the country needs. Do let us know what you think about this in the comment box below. For more news and updates, you can log on to www.hwnews.in. Also, a very small request to all of our viewers. First of all, thank you so much for all the love, all the appreciation. We have recently touched 2 lakh subscribers on our YouTube channel HW News English. So I would like to request you all to go a step further and contribute to our service to you. We have launched a membership drive on our YouTube channel HW News English. If you want to support us, if you like the journalism that we do, please click on the join button. You will get to see the levels of membership that we offer, and under each level of membership we have certain perks and benefits to offer. About that you will get to know in the video that is following. So please do support us, do consider supporting us, and do consider contributing to us. Thank you so much.